Hello and welcome back to my new stream, and today is the day 3 for this project database backup utility जहाँ पर हम लोग from the scratch we are making this project, and this project is from the roadmaps where we get all sorts of different roadmaps for the different text और tech stack. So आज हम लोग day 3 पे जो focus करेंगे, and by the way guys, happy Republic Day to all of you. And today हम लोग आज जो हम लोगों ने कल क्या क्या किया था हम लोग बता देते हैं. हम लोगों ने डिफरेंट डेटाबेसेस को कनेक्ट किया. यस, वी कनेक्टेड डिफरेंट डेटाबेसेस यूजिंग JDBC drivers. Okay, so why we were using JDBC drivers? Because other than JDBC drivers we could have used Hibernate ORMs, but हम लोगों ने कल देखा कि Hibernate ORMs are not that recommended for this project because वो लॉन्ग लिव्ड रहते हैं, लॉन्ग लिव्ड कनेक्शंस होते हैं और टैम्पर लाइक वो एग्जैक्ट स्कीमा में भी नहीं जा पाते हैं. तो अदर वेज ऑफ different problems थे Hibernate ORM में. So the ChatGPT recommended कि we will go with the JDBC drivers, and JDBC drivers connections हम लोगों ने करा था with different databases, and हम लोगों ने देखा था कि वो connect भी हो गया. And second thing we have done is connection with the parameters. We have used host, port, username, password, database name. Database name हम लोगों ने यूज़ किया था, और फिर हम लोगों ने डेटा टाइप मतलब डेटाबेस टाइप भी डाला था इसमें. तो हमारे पास टोटल ऑफ 6 पैरामीटर्स हो गए थे, जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं. हमारे पास टोटल ऑफ 6 पैरामीटर्स हो गए थे, जिसमें हम लोगों ने JDBC URL में हम लोगों ने डेटा टाइप, होस्ट, पोर्ट और डेटाबेस नेम ही भेजा था, ताकि हम लोग का एक URL जनरेट होकर के वापस आ जाए. JDBC ड्राइवर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग के पास एक कनेक्शन इंटरफेस होता है. जो कनेक्शन इंटरफेस हम लोग को कहाँ से मिलेगा? कनेक्शन जो हम लोग को मिलेगा वो थ्रू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन से. ये गेट कनेक्शन हम लोग को कनेक्शन रिटर्न करता है बाय गिविंग अप द JDBC URL, यूजर नेम एंड पासवर्ड. ओके, and after we get the connection we will go to the registry dot to set the connection. So हम लोग को लास्ट में क्या मिला था? connected to the so and so database type at the host and port. Okay, तो हम लोगों ने देखा था. कल मैंने कुछ फोल्डर्स में चेंजेस किए थे by referring to the AI and asked them कि बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, recommended फोल्डर स्ट्रक्चर्स क्या है. अभी हम लोग उसके ऊपर गो थ्रू करेंगे कि बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर्स क्यों है, क्या है, कैसे है. तो अभी हम लोगों ने क्या क्या किया है कि कमांड में हमने माई कमांड्स को हटा दिया, वो जितने भी थे क्लीन अप कर दिया है. फिर कॉन्फ़िग में हम लोगों ने जो रजिस्ट्री वाला क्लास बनाया था, हम लोगों ने वो रजिस्ट्री वाला क्लास हम लोगों ने डाला है इसमें, जिसमें हम लोग कनेक्शन सेट कर सकते हैं, कनेक्शन गेट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन गेट कनेक्टेड एंड वी कैन ऑल्सो क्लोज द कनेक्शंस. डोमेन हम लोगों ने एक नया फोल्डर बनाया है. डोमेन में क्या होगा, हम लोग के इनम्स वगैरह जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं वो सारे डोमेन्स में जाएंगे. सर्विस में क्या होगा, सर्विस में जो हम लोगों ने बिजनेस लॉजिक सोचा है, जैसे कि ये एक हमारा बिजनेस लॉजिक है, तो ये हमारा सर्विस में जाएगा. फिर हमारा एक यूटिल होगा. यूटिल इज़ द हेल्पर, यू कैन से हेल्पर क्लासेस. सो दिस इज़ अ हेल्पर क्लास, सो वी हैव पुट इट इन द हेल्पर क्लास. So first let's go to the ChatGPT and see कि what were the best recommended folder structures जो कि हम लोगों ने मैंने इस पे implement किया था. Before that हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे. आज हम लोग पढ़ेंगे कि पहला तो वो सर्विसेज जनरेट करेंगे हम लोग. सर्विसेज जनरेट करने के बाद हम लोग आज बैकअप ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि बैकअप टाइप्स तो इन्होंने बता दिया है कि हमारे पास सपोर्ट फुल बैकअप का होना चाहिए, इंक्रीमेंटल बैकअप होना चाहिए, डिफरेंशियल बैकअप टाइप होना चाहिए. फिर बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स एंड यूज़र प्रेफरेंसेस, तो यूज़र प्रेफरेंसेस भी हम लोग को डालना पड़ेगा यूजिंग द बैकअप इन द CLI. फिर कंप्रेशन भी कंप्रेस करना पड़ेगा बैकअप फाइल्स को, रिड्यूस द स्टोरेज. तो
आज हम लोग बैकअप ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चाहते हैं चैट जीपीटी पे, ताकि हम लोग वो जान सकें कि हम लोग कौन सा फोल्डर स्ट्रक्चर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स गो। तो हम लोगों ने कल ये देखा था कि वाई शुड वी यूज द जीडीबीसी ड्राइवर्स। तो हमारे पास कुछ कुछ थे कारण। तो लेट्स गो थ्रू वंस एंड देन वी विल मूव अहेड टू द बैकअप ऑपरेशन। तो लेट्स गो अप 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 अप। आई होप मेरा वॉइस आ रहा है। लेट मी चेक वंस। थोड़ा वॉइस लाउड म्यूजिक है, लेट्स उसको कम कर देते हैं। ठीक है। तो यस, कहाँ गया वो? हाँ, here we go up to this. We should go up to the very up. This. ओके, अभी वो चीज़ नहीं मिल रहा है, बट ठीक है। वी विल गो अहेड एंड सी कि व्हाट आर द CLI स्ट्रक्चर विच इट इज़ रिकमेंडेड। ठीक है। तो लेट्स गो अप हियर इन द AI। तो फिर विल गेट द होल ओवरव्यू। तो इसमें क्या बोला है कि जो गाइडेड प्रिंसिपल्स होते हैं CLI प्रोजेक्ट्स के, कि हम लोग को सेपरेशन कंसर्न रखना चाहिए। दैट इज़ कमांड लेयर को बिजनेस लॉजिक से नहीं जोड़ना है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को। टेस्टेबिलिटी होना चाहिए कि कमांड शुड बी थिन एंड लॉजिक शुड बी टेस्टेबल विदाउट CLI कॉन्टेक्स्ट। फिर एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए, इजी टू ऐड न्यू कमांड्स एंड सब कमांड्स। फिर फ्यूचर माइग्रेशन, तो इस पे हम लोग अभी नहीं देखेंगे कि फ्यूचर माइग्रेशन टू रेस्ट और बैच शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम लोग का जो रिकमेंडेड फोल्डर स्ट्रक्चर था, जो कि हम लोगों ने इसमें देखा, तो हमारे पास कुछ कुछ फाइल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, फोल्डर्स होने चाहिए। दैट इज कमांड होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए फॉर द बिजनेस लॉजिक, डोमेन होना चाहिए फॉर कोर डोमेन मॉडल्स। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक मॉडल डाला है, ठीक है, डेटाबेस टाइप enum वगैरह, तो ये सारे मॉडल्स यहाँ होने चाहिए। रेपोजिटरी, इफ़ वी नीड सम थिंग्स थ्रू रेपोजिटरी देन वी विल यूज़ इट। फिर कॉन्फ़िगरेशन बीम्स, जो भी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, बीम्स वगैरह, जो भी मेथड्स को हम लोग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो सारे। फिर एक्सेप्शनल्स, कस्टम एक्सेप्शंस हम अगर बनाते हैं तो फिर हम लोग एक्सेप्शन में डाल सकते हैं। यूटिल, जो कि हमने बोला हेल्पर क्लासेस डालेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक्सटर्नल सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए। तो अभी तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी हम लोग आगे नहीं जानेंगे। अभी हम लोग जो जितने भी हैं, तो इसमें हम लोग रिकमेंडेड में ही काम करेंगे। तो लेट्स मूव अहेड। और फिर हम लोग जो है बैकअप के बारे में भी जानते हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट बैकअप थ्रू। फर्स्ट विल गो थ्रू द इंटरनेट कि कैसे किया जाएगा। एंड देन अगर हम लोग के पास कोई और ऑप्शंस नहीं है जहाँ पर हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के फिर हमें कुछ समझ नहीं आया, देन वी विल गो थ्रू AI। ओके, बट फर्स्ट वी विल गो फॉर द डॉक्यूमेंटेशंस कि अगर हमारे पास कोई भी रिकमेंडेड डॉक्यूमेंटेशन है तो व्हाट वी विल डू इज विल गो हियर इन द इंटरनेट एंड विल सर्च। तो लेट्स गो, क्या सर्च करना है हमें? तो हमारे पास बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए। तो हम लोग कैसे सपोर्ट फुल इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल बैकअप टाइप्स बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स एंड यूज़र प्रेफरेंस। तो हमें एक बैकअप टाइप बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? तो वी विल गेट बैकअप टाइप।
story extends. So creating a backup type, let's go to the documentation कि कहीं पर हमारे पास है कि नहीं है. तो path completion, path input, how to backup using shell script. Okay, तो हमारे पास जो Spring Shell का ट्यूटोरियल है to create backup. Drums on the pavement. History bleeds through abandoned basements. Every mural's a chapter, every crack's a scar. Legends written louder than the engines of cars. Eyes in the shadows, whispers in code. Respect is the language on this narrow road. Chains rush slowly, but the spirit won't break. Power in the silence and the moves we make. No statues raised, just candles and chalk. Every night sermon gets preached on the block. From dusk till dawn, the mist still ascends. Block legends never die, the story extends. Names carved deep in the brick and stone. Every block legend built that throne. No crowns given, we take our claim. Every street corner still knows the name. Legends don't fade, they echo and still. Concrete remembers what the papers conceal. This is the anthem, the fire to pledge. Stories of the block live on the edge. तो हम लोग यहाँ पर क्या है कि there is no specific support for that, and Spring data is intended for transactional use, not batch operations. Of course, there is find all method. Spring batch is probably a bit better choice as it focuses long running heavy batches process. तो चलो वो सब नहीं जाना. If you really need a backup of the database from your application level, consider your database manual. Maybe is some commands to dump the content of the database to a file, for example in H2. Okay, sorry. I am using a script of SQL command from JDBC template to dump the database to arbitrary file, but I am using this technique to reset the database after each integration test.
Please follow the link to get an idea regarding the Mantis Spring support. Add the following dependency to pong.xml. Now, if Gradle Spring project, add the dependency to the build.gradle file group. This article may help you to understand. तो हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, let's see कि क्या प्रोवाइड कर सकता है. How to back up a MySQL database programmatically using the MySQL backup 4J. Now the thing is कि हम लोग क्या क्या करेंगे. तो इधर exporting the MySQL database programmatically exporting, तो यहाँ पर सारे प्रॉपर्टीज वगैरह दिए हुए हैं. जहाँ पर MySQL database नेम है, पासवर्ड है, यूज़र नेम है. So we need a new properties object that then added the required properties for the database connection, which are database name and use. Supplying just these three properties will make MySQL backup 4J assumes that the database is running on the local host at port 3306. Now it will therefore attempt connection using the. At this point, the library can export our database and generate a zip file containing a SQL dump file, and the file is named in the format like this. Okay. तो हमें एक चीज़ देखना है कि इसमें अब हमें डेटाबेस का जो बैकअप क्रिएट करना है कि तो उसी डेटाबेस में ही बैकअप क्रिएट कर लें, या फिर जो भी डिफरेंट डेटाबेसेस के बैकअप्स हम लोग एक पर्टिकुलर डेटाबेस में ही क्रिएट करके रखें. तो लेट्स फाइंड आउट. तो ये वाला तो मुझे समझ में आया कि सेंडिंग जनरेटेड जिप फाइल टू द क्लाउड स्टोरेज. तो ये MySQL के लिए है, ठीक है. अगर हम पूछें हाउ टू क्रिएट बैकअप फॉर PostgreSQL database using CLI. तो यहाँ पर restore a backup while using the command line. तो यहाँ पर हमारे पास Postgres का documentation है, तो we will go through this. So the documentation is supported using the Postgres where you may view the same page for the current version. चलो ठीक है, यहाँ पर आ गया हम लोग. Chapter 5 is backup and restore. तो टेबल ऑफ कंटेंट है कि हमारे पास एक SQL डंप है जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कंटेंट्स है, जहाँ रिस्टोरिंग द डंप यूजिंग पेज डंप पाल हैंडलिंग लार्ज डेटाबेस फाइल सिस्टम लेवल बैकअप. अब हम लोग के पास कंप्रेशन का भी फीचर होना चाहिए. हमको जैसा लगता है कि मेरे को जितना आइडिया लग रहा है कि CLI के थ्रू हम लोग कमांड देंगे, एंड कमांड देने के बाद हमारा जो सर्विस सेक्शन है वहाँ पर वो काम होगा. तो एक काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक डेटाबेस कनेक्शन सर्विस बनाते हैं, ठीक है. जैसे ये कनेक्शन सर्विस बनेगा हम इसको कंपोनेंट दे देंगे, कंपोनेंट नेम दे देंगे जिससे कि हम ऑटो वायर कर पाएँ. अब जैसे ये बन गया, अब हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक रिटर्न में हम लोग लाइक कुछ भी दे सकते हैं, लाइक बुलियन भी दे सकते हैं. तो लेट्स से कि हम लोग अभी बुलियन देते हैं. बुलियन में कनेक्ट DB, कनेक्शन टू DB, और फिर यहाँ पर हम लोग जो है अपने बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म करेंगे. अब कनेक्शन टू DB में हम लोग और रिटर्न टाइम तो बुलियन है, लेट्स रिटर्न हियर फॉर नाउ इट्स रिटर्न ट्रू, ठीक है. अगर हम लोग यहाँ रिटर्न ट्रू कर देते तो हमें यहाँ ऑटो वायर करना होगा. ऑटो वायर प्राइवेट, ठीक है. कनेक्शन अभी हम लोगों ने क्या बनाया था, डेटाबेस ना, डेटाबेस बेस कनेक्शन सर्विस, फिर
यहाँ हम लोग नाम इसको दे सकते हैं डीबी सर्विस या कनेक्शन सर्विस। ठीक है, जैसे ये कनेक्शन सर्विस देंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस कनेक्शन सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो कनेक्शन सर्विस डॉट कनेक्ट डीबी, और ये जो चीज़ रिटर्न करेगा वो एरर हैंडलिंग में काम आ सकता है। दैट इज़ हम अगर यहाँ ट्राई एंड कैच ब्लॉक, यहाँ नहीं तो अंदर ट्राई एंड कैच ब्लॉक बनाते हैं, और यहाँ हम लोग स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। बेस्ट रहेगा स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसको मैं हम लोग अभी के लिए स्ट्रिंग क्लास टाइप बना देते हैं, और ये सारे जो है हम लोग पास ऑन कर देंगे सर्विस में। तो एक काम करते हैं, ये कॉपी करते हैं और ये यहाँ हम लोग पेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम लोग ये पेस्ट कर रहे हैं, 1 मिनट है, तो ये यहाँ हम लोगों ने पेस्ट कर दिया है, और ये सारे हम लोग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा डेटाबेस टाइप डीबी टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग में हम लोग ले लेंगे होस्ट, फिर स्ट्रिंग में ही पोर्ट, फिर स्ट्रिंग में ही पासवर्ड, और फिर स्ट्रिंग में ही डेटाबेस या फिर डेटाबेस नेम, और हाँ एक यूज़र नेम भी। तो स्ट्रिंग में ही यूज़र नेम, तो स्ट्रिंग में यूज़र नेम आ गया। यूज़र नेम कैन नॉट बी फाउंड, तो स्मॉल लेटर्स में है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स कर देते हैं। यहाँ पे हमें ऑटो ऐड करना होगा रजिस्ट्री, यहाँ से हम लोग रजिस्ट्री हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ से ये लॉजिक्स हटा देंगे हम लोग, और ये यहाँ पर ऑटो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए तो ये सही है। ड्राइवर मैनेजर नहीं आ रहा, ड्राइवर मैनेजर ले लिया हमने, और फिर ये रिटर्न हटा दो। कनेक्शंस नहीं आ रहे हमारे, कनेक्शन ले लेते हैं, गेट कनेक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, अनहैंडल एक्सेप्शन है ना, तो यहाँ हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा देंगे। तो गाइस ये एक बहुत सही मेथड है कि हमें हमेशा एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी चाहिए। तो वी विल थ्रो एरर, हाउ वी विल थ्रो एरर, रिटर्न ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, we will return this. So as soon as we return this, we need to have this registry as well, ताकि हम लोग पता कर पाएँ कि ये कनेक्टेड है कि नहीं। तो कॉपी एंड पेस्ट, एंड यहाँ से हम लोग ये हटा देंगे। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली रिटर्न दिस। ठीक है, रिटर्न। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या डालना होगा, पहले डीबी टाइप डालो, डीबी टाइप डाल दिया, होस्ट डाल दो, फिर पोर्ट डाल दो, फिर पासवर्ड डाल दो, फिर डेटाबेस नेम डाल दो, और फिर यूज़र नेम डाल दो। तो ये जैसे जाएगा एंड विल बी गुड टू गो। तो हमारा जो बिज़नेस लॉजिक है वो अब हमारा सर्विसेज के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, और हमने एक्सेप्शंस भी कैरी आउट कर लिए कि कैसे एक्सेप्शंस हम लोग कैरी ऑन करेंगे। तो अभी तक के लिए ये है, और बाकी बात जितने भी हमारे फालतू के इंपोर्ट्स हैं वो हटा देते हैं ना। अब हमें डेटाबेस कनेक्शन के बारे में देखना है, तो हम लोग को अब हर एक, जैसे जितने भी हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं, फॉर टाइम बीइंग अभी हमारे पास MongoDB अच्छे से नहीं चल रहा है, तो वी विल गो थ्रू कि कैसे ठीक करते हैं। बट फॉर अ वाइल
हम लोग माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस एसक्यूएल के पास जाएंगे और उनके हाउ टू क्रिएट अ बैकअप इन माई एसक्यूएल एंड इसका पोस्टग्रेस का वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक सर्विस बना दी है, ठीक है, सर्विस का कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे। तो लेट्स गो टू लॉग फाइल मेंटेनेंस। ओके, ये प्रीवियस में लॉग एज एवरीथिंग दैट कंटेन्स वैल्यूएबल डेटा प्रोसेस डेटाबेस शुड बी बैक्ड अप रेगुलरली. While the procedure is essential simple, it is important to clear understanding of underlying techniques and assuming assumptions. There are three fundamental different approaches to backing up the PostgreSQL. तो हमारे पास three different options हैं. That is doing SQL dump. Second is file system level backup and continuous archiving. तो अब हमें सोचना है कि हमें क्या बेटर है। तो लेट्स each has its own strength and weaknesses. Each is discussed in the following section. तो हमें किस पे जाना चाहिए गाइस? तो SQL डंप्स पे जाना चाहिए, फाइल सिस्टम पे जाना चाहिए, या फिर कंटिन्यूस आर्काइविंग एंड पॉइंटेड टाइम रिकवरी। तो हम लोग लेट्स गो थ्रू each and every section. Let's go to SQL dump first, ठीक है। ओके ओके ओके, तो माई एसक्यूएल की भी होगी, तो मैं माई एसक्यूएल का खोल लेता हूँ। ये तो हमारे प्रॉपर मिल गया हमें एसक्यूएल ग्रामर। How to create MySQL बैकअप, ठीक है। यहाँ पर डेटाबेस बैकअप फ्रॉम MySQL, तो यहाँ पर gigs for gigs भी है। यहाँ क्या दिया है? Backend MySQL is crucial for data collection and recovery, and there are several methods available to create backup. Each will have its own benefits and use case. Backing up a MySQL database is a crucial practice for protecting the data against loss or corruption. पहला है यूजिंग द MySQL dump, दूसरा है PHP admin, तीसरा है MySQL workbench, चौथा है यूजिंग फाइल सिस्टम स्नैपशॉट। हमारे पास तीन है, तो एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ के देखते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल है फॉर आवर, है ना, प्रोजेक्ट। तो पहले हमें बताते हैं कि कैसे कैसे टाइप के बैकअप चाहिए। कैसे कैसे टाइप के बैकअप चाहिए? सपोर्ट फुल इंक्रीमेंटल एंड डिफरेंशियल बैकअप टाइप based on the data type, database type and user preferences. स्टोरेज ऑप्शन में कि लोकल स्टोरेज है और क्लाउड स्टोरेज है। अलाउ यूजर टू स्टोर बैकअप फाइल्स लोकली ऑन द सिस्टम। अब देखो, इसमें हम लोग अगर इसमें पढ़ें गिग्स फॉर गिग्स में, MySQL dump is a command line utility used to create logical backups in MySQL. It generates a SQL file containing all the SQL statements required to recreate the database schema and data. तो समझ गए, यहाँ डेटा बैकअप नहीं हो रहा है, सॉरी मतलब यहाँ पर सारे कमांड्स जितने भी हम लोगों ने जनरेट किए हैं उनका बैकअप हो रहा है, ताकि कभी भी कोई भी टाइम पे ये सारे कमांड्स को रन कर दे और ये बैकअप क्रिएट हो जाए। तो MySQL डंप ही है। तो कमांड लाइन जाओ, रन द MySQL डंप कमांड, जिसमें MySQL यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, डेटाबेस नेम और यूज़र नेम दिया हुआ है, फिर जो फाइल है वो स्पेसिफिक फाइल पे डंप कर दो। Replace username with a MySQL user based data, desired backup file. I think हमें MySQL डाउनलोड करना पड़ेगा। MySQL डाउनलोड,
तो MySQL कहाँ से मिलेगा? डाउनलोड डायरेक्टरी। अच्छा, इसका ट्यूटोरियल देख लेंगे हम कि कैसे डाउनलोड करते हैं MySQL, तो मेरे को याद नहीं आ रहा। Now third is enter your password will be prompted to enter the MySQL password. This method creates a .sql file. तो पहला हम लोगों ने टेक्निक जान लिया। पहला टेक्निक क्या है, हमारे पास एक MySQL डंप है। तो पहला MySQL डंप में क्या होगा कि हम लोग जो है जितने भी लॉजिकल बैकअप्स हैं वो क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे हम लोग? एक लॉजिकल बैकअप क्रिएट करेंगे। इट जनरेट्स अ .sql फाइल जिसमें जितने भी SQL क्वेरीज हुए हैं वो सारे रीरन हो। तो इट जनरेट्स अ .sql फाइल कंटेनिंग ऑल द SQL स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू रिक्रिएट द डेटाबेस स्कीमास एंड डेटा। तो ये हमारा एक कमांड है जो कि कर सकता है, फिर हमें पासवर्ड दिया जाएगा। चलो ये चीज़ तो हम लोग एक मेथड जान गए। दूसरा मेथड में क्या है? यूजिंग द PHP MyAdmin। Now PHP MyAdmin is a web-based tool to managing MySQL database and it includes functionality for creating backups through a graphical interface. Now we don't need this. We don't need this. हमें GUI नहीं चाहिए, हमें GUI नहीं चाहिए। ठीक है, हमें GUI नहीं चाहिए तो हम लोग इस पे नहीं जाएंगे। तो पढ़ भी लेते हैं कम से कम। Creating back through the graphical is a easy to use interface and both full and partial backup। तो हमें चाहिए भी, हमें फुल और पार्शियल बैकअप का ही एक्सेस चाहिए। तो हम लोग अगर यहाँ देखते तो हमें यहाँ बोला गया है कि या तो तुम सपोर्ट करो फुल, या तो इंक्रीमेंटल लेवल पे करो, या तो फिर डिफरेंशियल बैकअप टाइप्स करो। तो हम लोग जो है ये वाला मेथड तो यूज़ नहीं करेंगे, GUI वाला। ठीक है। थर्ड, MySQL वर्कबेंच। ये भी एक GUI है फॉर मैनेजिंग एंड बैकिंग ऑफ द डेटाबेस। तो MySQL वर्कबेंच प्रोवाइड्स अ यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र। तो ये भी हमें नहीं लगता है कि हम करेंगे कि MySQL वर्कबेंच खोलो, फिर डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करो, फिर नेविगेट करो, फिर सेलेक्ट द डेटाबेस। तो ये भी हमें नहीं चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फाइल सिस्टम स्नैपशॉट करेंगे। तो फाइल सिस्टम स्नैपशॉट्स create physical backup by capturing the state of the database file directly, and this is especially useful for the large database and can be done while the database is online। तो स्टेप टू स्टेप क्या है कि stop the MySQL service sudo by optional by recommended for consistency। System stop MySQL, create the snapshot, use our file system snapshot to create a snapshot for MySQL data directory। तो ये वाला करेगा, फिर रीस्टार्ट कर। ओके, ये हो गया हमारा फाइल सिस्टम स्नैपशॉट। तो ये हो गया हमारे 4 तरीके जिससे हम लोग अपना बैकअप क्रिएट कर सकते थे। या तो हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू कर लें, या तो हम लोग फाइल सिस्टम बैकअप स्नैपशॉट कर लेते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि अब हम लोग पोस्टग्रेस पे कैसे कर सकते हैं। तो पोस्टग्रेस पे भी हमारे पास 2 से 3 चीज़ें हैं कि हम लोग फाइल सिस्टम लेवल बैकअप कर सकते हैं, कंटिन्यूस आर्काइविंग कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस आर्काइविंग है, पॉइंट इन टाइम रिकवरी। व्हाट इज़ पॉइंट इन टाइम रिकवरी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबके अपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। ईच इज़ डिस्कस्ड इन टर्म्स इन फॉलोइंग सेक्शन। लेट्स गो वन बाय वन की क्या क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, और पढ़ के उसके बाद हम लोग जो है गो थ्रू करेंगे उस पर। तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द आइडिया बिहाइंड द डम्प मेथड इज टू जनरेट। तो हमें जैसा लगता है कि जैसे MySQL डम्प हमने क्रिएट किया था, वैसे ही इसमें भी एक SQL डम्प क्रिएट होगा। ठीक है, जो कि हम लोग के शायद CLI के थ्रू ही होगा। ठीक है, अब 2 CLI मेथड्स को कैसे मैनेज करते हैं, ये अगर हम लोग CLI मेथड के थ्रू जाएंगे तो इनका अपना एक CLI मेथड है। तो वो कैसे हम लोग क्रिएट कर मर्जअप करेंगे ये देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि हमारा खुद का एक CLI है। सॉरी गाइस, हमारा एक खुद का CLI है और हमें जो है इनके CLI के या इनके सिस्टम के थ्रू इंटीग्रेट करना होगा ना।
पढ़ते हैं आगे. As you see the PG dump, now that is a PG dump database name and a dump file. Now, as you can see that the PG dump writes its result to the standard output. We will see below how this can be useful. While the above command creates a text file. ये जो है एक text file like PG creates a file or in other format that allows you to parallelism and more fine-grained control to object restoration. क्या हमारे पास एक शॉर्ट नोट है बिकॉज बहुत ज़्यादा ही ये दिया हुआ है कंटेंट. स्टिल चलो पढ़ ही लेते हैं. फिर but remember that the PG term does not operate with a special permission. In particular, it must have read access to all the table that you want to backup. So in order to backup the entire database, you almost always have to run it. So entire you can still backup the portion of the database to which you have access using the options such as schema or table. Now to specify which database server VM should contact, use the command line option like a host and port. Conveniently, the server will normally have the same command in default like any other program. Restoring a dump. This is a restoring a dump or a part handling large database. Now, some operating systems have maximum file size limit that can cause problem when creating large PG dump. Fortunately, PG dump can write to the standard output, so you can use standard Unix to work around the potential problems. Use compressed dumps. You can use your favorite compression program, for example gzip. ओके, तो हमने PG dump को database नेम दे दिया और फिर हम इसको कंप्रेस करके इस फाइल में कंप्रेस फाइल में डाल दें. रीलोड कर सकते हैं इन तरीक़ों से. नाउ यूज स्प्लिट एंड द स्प्लिट कमांड allow you to split the output into smaller files that are acceptable in size to the underlying file system. For example, to make up 2 gigabit chunks. तो हम लोग स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं इसको. अगर तुमको कंप्रेस नहीं करना है तो यू कैन स्प्लिट द डेटाबेस इनटू चंक्स. Now, if you are using a GNU split, it is possible to use it and gzip together. तो तुम split भी कर सकते हो और उसको compress भी कर सकते हो. Now, it can restore using the zcat. Okay. तो इसको पढ़ के मुझे इतना समझ में आ रहा है कि पहला ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, तो मैं इसको बता देता हूँ. जैसे हम लोगों ने अभी हम लोगों ने MySQL के बारे में पढ़ा कि MySQL में जो भी स्कीमास करना चाहते हैं बैकअप के तौर पे, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ MySQL यूज़र नेम इसे वगैरह वगैरह और फिर कोई बैकअप फाइल नेम. तो सिमिलरली पोस्टग्रेस में भी हम लोग एक डंप फाइल बना सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ, जो कि एक फाइल में टेक्स्ट एज अ क्रिएटेड एज अ टेक्स्ट फाइल. तो वही स्कीमा सारे जो है वो रीस्टोर मतलब कि बैकअप हो जाएंगे. ठीक है. अब हम लोग इसमें देखो स्पेशल प्रिविलेजेस दिया हुआ है कि जो भी तुम PG डंप बना रहे हो, PG डंप इज़ अ रेगुलर पोस्टग्रेस क्लाइंट एप्लीकेशन. तो अब इसमें क्या हम लोग को क्या करना है कि हमें इसको या तो स्पेशल प्रिविलेजेस देना पड़ेगा, सफिशिएंट प्रिविलेजेस देना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारे इंटायर डेटाबेस, इंटायर टेबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल सबको वो कैप्चर कर पाए. या तो फिर तुम उसको पार्शियल भी दे सकते हो बाय गिविंग अप द स्कीमा और द टेबल.
Now to specify the database server, pgdump should contact use the command line for host and port. ठीक है. Like any other Postgres client application, pgdump will be by default connect with the database user name that is equal to the current operating system username. To override this, and either specify -u option or set the environment variable pg user. Okay. An important advantage of pgdump over the other backup method described later is the pgdump's output can generally be reloaded into new version of Postgres, whereas the file level backups and containers archiving are dumps create the pgdumps are internally consistent and meaning that a dump represents a snapshot of the database at the time pgdump began running. Okay. Okay. ये तो पढ़ा. चलो फाइल सिस्टम बैकअप देखते हैं. File system level backup. An alternative backup strategy is to directly copy the files that the Postgres uses to store the data in database. Okay, to explain where you can for doing file system backup. For example, तुम ये command use कर सकते हो in order to backup the file. Now, there are two restrictions, however, which may make this method impartial or least inferior to pgdump method. कि the database server must be shut down in order to get a usable backup. तो फाइल सिस्टम बैकअप हम लोगों ने जब यहाँ पढ़ा था MySQL में, तो इसमें भी इन्होंने बोला था कि तुमको अपना MySQL बंद करना पड़ेगा, फिर उस तरह से एक स्नैपशॉट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर तुमको रीस्टार्ट करना पड़ेगा. तो फाइल सिस्टम बैकअप जो है वो फेवरेबल नहीं होता है. तो hardware users such as disallowing all the connection will not work. In part due because TAR and similar tools do not take atomic snapshot of the state of the file system, but also because of the internal buffering. Now, if you have dug into the details of the file system layout of the database, you might be tempted to try to backup or restore only certain individual tables or database. This will not work because the information contained in these files is not usable without the commit log file, which contains the commit status of all the transactions. Our table file is only usable with this information. Of course, it is not impossible. The alternative file system backup approach is to make a consistent snapshot of the data directory. If the file system supports the functionality and you are willing to trust, that is to make a frozen snapshot of the volume and copy the whole directory from the snapshot to backup device and then release the frozen snapshot. This will work even while the database server is running. अच्छा ओके. तो यहाँ ये कह रहा है कि हमारे पास एक अलग ऑल्टरनेटिव भी है. ठीक है. तो अलग ऑल्टरनेटिव हमारा क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फ्रोजन स्नैपशॉट बना सकते हैं. ना व्हाट इज फ्रोजन स्नैपशॉट विल यूज एंड्रॉइड बैकअप अप्रोचेस इज टू मेक अ कंसिस्टेंट स्नैपशॉट इफ द फाइल सिस्टम सपोर्ट्स द फंक्शनैलिटी. The typical procedure is to make a frozen snapshot of the volume containing the database, then copy the whole data directory, and then release the frozen. However, a backup create in the way says the
database files in a state as the database server is not properly running. Okay. तो फाइल सिस्टम बैकअप के बारे में तो समझे कि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक पहला ऑल्टरनेटिव था कि हम लोग एक फ्रोजन स्नैपशॉट्स बनाएं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम में बैकअप को what is the one exporting is this method copies the actual database files from the disk. For example, this means you are backing up everything. PostgreSQL use internet to store data. Ash on the floor. Now, why Smoking is a the tune. method not commonly Lay back recommended? with the Because dead. database We all must be got shut down room. and Postgres keeps data in Cushion memory the and crib. writes it in the disk Where gradually. silence The bloom. database is running while you copy files, you may get corrupted or inconsistent data. Underground throne But where the saying beat simple decays. blocking Couple user full of is not smoke, I ain't enough. seen no day. Therefore, Flick you that must flame, let the stop the ritual spark. Eyes had PostgreSQL those before the posted in the backup and you dark. must Walls stop the dripping Postgres moss. before the Base so restore. thick. Blunt so This fat, can it could cause raise the a crick. downtime. Now No you clocks, no cannot cops, backup just time on individual freeze. And a tables. cold Second is painkiller they with the cannot ancient backup breeze. individual Cushion the tables. grip. I Postgres float stores with the dead. transaction Smoke ring information halos above my head. Low beat separately. slowing like फिर stone. Postgres High in the stores the zone, but I'm transaction never alone. information My flow separately. breaks मतलब under जो every committed stone. logs But होते हैं I उसको don't walk, I glide with dawn. Eyes glow separately green store like a करता reaper's है. flame. But I A land with table the file gold, so cannot play no work alone game. That block without run this slow like a transaction funeral history. song. Because of this, Baseline you crawl like a cannot store saucy a song. single table, you Incense cannot cushion the restore the final entire room. This database is dead cluster. man Now, chill, welcome to the truth. better file system approach is the snapshot backup. If your file system supports snapshots like LVM, ZFS, and Cloud Disk, how it works is to take a frozen snapshot. Forever afloat. Now, how it works, better file system approach क्या है कि take a frozen snapshot of the disk, copy the entire PostgreSQL data directly from the snap and release the snapshot. Can stay running. Important detail है कि when restored, Postgres thinks it's crashed and replays WL write ahead log. If you must include WL file in the backup running at your point. The limitations of snapshot if Postgres data is spread across multiple lists. All snapshots must be taken at the exact time as possible. Now, alternative solution is the short shutdown. Stop user briefly, take snapshot, start the into its continuous archiving. This is recommended for the production. Use base backup and wall archiving. Backup is consistent even while database is running and no snapshot timing issues. Restore using WL replay. Sync with minimal downtime. Run sync while Postgres is running. Stop Postgres. Run this. Start Postgres again.
Why this works? That because the first sync copies most data and second sync is fast and consistent, very little downtime. The size and speed comparison PG तब use करो when it is smaller and the speed is slower, can restore individual tables, large and faster and only full restore. Simple conclusion. For small or flexible backup, use PG For large production database, never copy the Postgres files while it is running unless using the snapshot of WAL. Now, if you want, I can compare with these. Fair enough. तो हम लोग समझ गए इसके बारे में, तो हम लोग चलते हैं continuous archiving and point in recovery, setting up a WL archiving, making up a big base backup and making an incremental backup. तो अभी हम लोग वही पढ़ रहे थे कि हम लोग को incremental backup भी चाहिए. ठीक है, we need a supportful incremental backup and differential backup. Now what are these types? Let's very well पढ़ लेते हैं इसके बारे में. तो अगर हम लोग इसमें जाए differential backup is backup of all changes since the last full backup. Restore process, restore full backup, restore last faster. तो quick comparison हो गया इधर. data backed up, backup time, full का everything है. changes since last backup, changes since last full. now backup time जो है वो slow होता है. restore fast होता है. इसमें stress medium storage usage high होता है इसमें. restore complexity simple, complex and simple है. risk level low, high, medium है. जी, तो photocopy the entire book, copy only the pages changed since yesterday and copy all pages changed since the first copy. Partial recommendation is critical system, large database, purpose और हमको जानना तो है.
हर समय पोस्टग्रेस मेंटेन करता है एक राइट अहेड लॉग इन पीजी वॉल सब डायरेक्टरी क्लस्टर data directory. The log records every change made to the database data files. This log exists primarily for crash safety purpose. If the system crashes, the database can restore it to consistency by replaying the log entries made since the last checkpoint. However, the existence of the log makes it possible to use a third strategy for backing a database. We can combine a file system level backup with backup of the wall files. If recovery is needed, we store the file system. Replay from the backup wall files to the system. More complex to administer than another. We do not need a perfectly consistent file system backup as the starting point. Any internal consistency in the backup of the log replay. We do not need a file system snapshot, just star since we can combine multiple units we can archive simply by renaming to archive the WL. Okay. PG will PG temple do not present file system backend cannot be used as part of continuous archiving solution. Such tabs are logical do not contain enough information to be used by WL. Okay. Oh, okay.
You have to have the common backup. Internally और बोला है कि कॉमन बैकअप इंजन हो, डेटाबेस स्पेसिफिक बैकअप प्रोवाइडर हो, फिर यूजर कॉन्फ़िगरेबल पॉलिसीज काम बनाना या तो हम लोग MySQL में डिफरेंशियल बैकअप नहीं क्रिएट कर पाएंगे. वी कैन हैव MySQL इंक्रीमेंटल बैकअप एंड फुल बैकअप. तो MySQL में दो ही ऑप्शन होंगे, ठीक है. इंक्रीमेंटल बैकअप होगा और फिर पोस्टग्रेस में तीनों ऑप्शन हो सकते हैं. इंक्रीमेंटल भी हो सकता है, फुल बैकअप भी हो सकता है और फिर डिफरेंशियल बैकअप भी हो सकता है. तो यू कैन यूज टूल्स लाइक tools and libraries for backup. To
तो मेरे पास स्टोरेज टाइप होगा और क्या ऑप्शंस आपको देने हैं। मैं स्टोरेज टाइप में भी देना है लोकल स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज। This heat don't lie, it just hides the truth. Texas mirage riding through the loop.
तो हम लोगों ने अभी MySQL डाउनलोड किया है एंड देन MySQL डाउनलोड करने के बाद हम लोगों ने एक यूज़र क्रिएट किया है जिसके पास जो है जो यूज़र नेम हमारा न्यू यूज़र और फिर पासवर्ड, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने MySQL ही इंस्टॉल किया है, वी हैवंट इंस्टॉल्ड द GUI right now, but ठीक है, still we don't have GUI, we can work on this. I don't know, मुझे मेल नहीं आ रहा था अभी तक, तो let's see कि आगे क्या होता है। फिर हम लोग जो है हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं ये ढूंढने का कि हाउ टू कनेक्ट इट टू द CLI, जो कि हमको यहाँ मिला है कि यहाँ पर हमें लिखा है अगर हम लोग बाहर जाएं इसके, नहीं यहाँ पर नहीं है, कहाँ था, अभी तो देखा था हमने, तो हमको इसमें कह रहा था कि इसको नए खोले तो गिटहब पे हमें डेटाबेस बैक का ये दिया हुआ है गिटहब लिंक, फिर स्टिल यहाँ पर जावा एग्जीक्यूशन, यहाँ पर रिकमेंडेड टूल्स एंड लाइब्रेरीज में नेटिव CLI utilities based for logical backups, Java execution libraries like java.lang.process builder, building Java class to RPG run, फिर बैकअप मैनेजमेंट लाइब्रेरीज, इसका डेटाबेस बैकअप, PG बैकअप रेस्ट और PostgreSQL, और फिर Volzy optimized for cloud native and continuous archiving. Implementation क्या है कि use the process builder, invoke the dump command, handle authentication, compress the output,
2. Okay. ठीक है गाइस, तो 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसके आगे का देखते हैं कि क्या करना है। अभी तक हम लोगों ने बस MySQL और फिर हम लोगों ने कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़े हैं कि किस किस मेथड से क्या क्या कर सकते हैं। फाइल बेस्ड रिकवरी है, फिर WL है, WL बैकअप है, फिर हम लोग आर्काइविंग बैकअप्स जो बोलते हैं, फिर हम लोग PG डम्प्स यूज़ कर सकते हैं। MySQL में हम लोग यूज़ कर सकते हैं MSQL dumps, MySQL dumps. So we will take a short break of 10 minutes or 20 minutes and then we'll be back. Okay. Okay. Let's get back in 20 minutes. तब तक आप लोग एंजॉय करिए, मैं आता हूँ।
want you. I need to give it all to you. Oh, I'm afraid of falling for you. Oh, I'm afraid, baby. I need to give it all to you. Oh, I'm afraid of falling for you. Oh, I'm afraid, baby. I need to give it all to you. But I'm afraid of falling for you. I'm afraid, baby. Baby, I need to give it all to you. I'm afraid of falling for you. I'm afraid, baby. Baby, I need to give it all to you. I'm afraid of falling for you. I'm afraid, baby. I pull up, I don't say much. Spy you at the bar, tryna play tough, but she looking over like she know what's up. One look, one night, that's bad luck. No way you think I'm not doing it right. When you see me up in the club with your girl, she alright. I might take her home tonight. I might take her home tonight. Why you type on your phone? She laughing at my jokes, she was standing alone. She whispered in my ear, said she hates your tone. Said she wanna be the one walking her home. I might take her home tonight. Walking, heads turn slow. New chain, wrist on glow. VIP, that's my zone. Every table feel like home. They line up just to catch my name. Flash that smile, it's a flame. I don't chase, I choose. Got that win, don't lose. I'm the boss of the night. Too rich, too clean, too fine. Pretty face, pockets on fire. Everybody want a piece of this life. I'm the boss of the night. Too rich, too clean, too fine. Handsome, better than desire. Everybody want a piece of this life. Black car,
Dropped at the door. Red dress dancing on the floor. She said, boy, you look like gold. Told her, wait till you see my soul, yeah. Hands up when I walk through. Every eye stuck like glue. They all press that luck. Tryna ride this wave I struck. I'm the budget. Too rich, too clean, too fine. Pretty face, pockets on fire. Everybody wanna be to this life. I'm the budget. Too rich, too clean, too fine. Pretty shit, I didn't understand. Everybody wanna be to this life. One look, they fall in line. One word, they lose their minds. I lean back, enjoy the view. Whole room spin around what I do. Everybody want a piece of this life. Too many fake and phonies in my city, so I had to take my talent out to Venice. I'm looking down at the city from the penthouse suite. She don't believe me when I say I'm rich and handsome, but she believe me when I pull up in a Phantom. They always say it can't be you, but it was me. I guess I had to show see ya. I've been up, I've been down. I've been lost, I've been found. The game done broke my heart, but I know I'm getting out. Yeah, the world done did me wrong, but I'm so passionate in it. It's gonna be a long road, but I know handle, yeah. But don't understand all the blood, sweat, tears, and years, all the sacrifices that I've made for me to be standing here, and I still get no respect. I guess it's all for the best, 'cause I'm always at my best when all I don't care. They don't understand, I don't care, I don't care. Oh, they don't understand, but I don't care, I don't care. Java CLI Too many fake and phonies in my city, database backend. so I had to take my talent out to Venice. I'm looking down at the city from the penthouse suite. She don't believe me when I say I'm rich and handsome, but she believe me when I pull up in a Phantom. They always say it can't be you, but it was me. I guess I had to show 'em, see ya. I said it, I'm in it, I did it, I get it, I lit it, I'm in it, I spin it, I'm spinning, I've been in it, यहाँ पर I just living in my truth. They ain't even seen my prime. You can't get me 'cause I'm timeless, and all the great stuff behind me. I had to make them believe me. I had to make them believe me. I had to make them believe. I had to make them believe. I had to make them believe. तो ठीक है, हम लोग क्या क्या यूज करेंगे? I had to make them believe. Too many fake and phonies in my city, PG backrest use. so I had to take my talent out to Venice. I'm looking down at the city from the penthouse suite. She don't believe me when I say I'm rich and handsome, but she believe me when I pull up in a Phantom. They always think it can make a hold of me. I guess I had to show 'em, see ya. Too many fake and phonies in my city, so I had to take my time to finish. I'm looking down at the city from the penthouse suite. She don't believe me when I say I'm rich and handsome, but she believe me when I pull up in a Phantom. .0 turn around
around execute process executor, तो you should use this process executor. That's on my mama, nigga. मैं इसका jar file लेके आता हूँ. Yeah. That's on my mama, nigga. Yeah. We'll go here and ask for process executor. Yes, we have this process executor. They like us. Man, I swear these niggas ain't like us. They ain't like us. Man, I swear these niggas ain't like us. How you switch up on a nigga? That shit crazy. These niggas out here dying by the hoe. That shit crazy. How you love me, then you hate me. That shit crazy. How you turn into a op? That's crazy. Man, that shit crazy. Man, I swear these niggas out here lazy. Bitches out here having babies. I can't love no hoe, bitch. You can't blame me. If I say I love you, then I love you. Don't betray me. Niggas snaking, they can't snake me. Said I been to jail, but you can't cage me. I know niggas envy me, and that shit crazy. Said that I ain't winning, nigga, you gon' have to pay me. Fuck you, pay me, nigga, that shit crazy. That shit crazy. That shit crazy. This project was They ain't like us. Man, I swear these niggas ain't like us. They ain't like us. Man, I swear these niggas ain't like us. Man, that shit crazy. These niggas out here dying by the hoe. That shit crazy. How you love me, then you hate me. That shit crazy. How you turn into a op? That's crazy. Man, that shit crazy. Man, I swear these niggas out here lazy. Bitches out here having babies. I can't love no hoe, bitch. You can't blame me. If I say I love you, then I love you. Don't betray me. Niggas snaking, they can't snake me. Said I been in jail, but you can't cage me. I know niggas envy me, and that shit crazy. Said that I ain't winning, nigga, you gon' have to pay me. Fuck you, pay me, nigga, that shit crazy. That shit crazy. we have created That shit crazy. Why does this have to feel so good? The drugs I take have become my food. Chasing a high just to change my mood. Every night feels deja vu. Every night feels deja using this vu. zero turnaround in order to integrate. We will go here as well. Every night feels deja vu. Chasing a high just to change my mood. Every night feels deja vu. Now, as long as we have this into execution, it will help us to execute. Every night feels deja vu. वो process Why ये जो does this process have executor है to वो feel time so production ready. Why does this have The recommended strategy for it is cloud storage, PITR, databases already sort backup. Your job is orchestration, abstraction, and user experience. walking home free? Bottle up parade, name on the receipt. Lying on the block that you watch me. ताकि Wrist so rude, make 'em all speak soft. selection Host at the का door like right this way. I ain't even show ID, still they part that way. Black on black fit, little gold on the collar. Smile worth way more than $1 million baller. Couch in the corner, we don't stand by the bar. Whole crew look rich like we fell off the stars. Be up, be up, be up, be up. They up, heat all peak when we passed them.
Rich and handsome, yeah, they choosing not the first one. If I want her, then she come into my side quick. She know what it is, told her come and ride with. VIP you've ever wrote, that's a hallway. Handsome face, money talk, that's a long play. Everywhere we go, 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 go. The same script. ओके, तो हम लोग कनेक्शन यहाँ से लेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग Blue lights hit, make the train go ocean. Shorty in my ear, talking fast, slow motion. Grab her by the waist, spin her once, then I'm ghosting. Got 'em in a line like a bottle, they toasting. Section on fire, everybody wanna see it. DJ see my face, change the whole mix here. Phone full of text, I'ma look it in the morning. Right now it's cash, cold glass, and the floor. Who you came with, who you leaving? You been staring at this table all evening. Dress painted on your problem, believe it. I just point once and you already see that. DLP with a rope, that's a hallway. And some face, money talk, that's a long play. Everywhere we go, 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 go. The same script.
ऑफ ऑल डेटाबेस नेम चाहिए, डेटाबेस टाइप चाहिए, टाइप ले लो, टाइप चाहिए हमको। और क्या चाहिए? डेटाबेस टाइप चाहिए, फिर हमको चाहिए बैकअप टाइप, बैकअप टाइप्स और क्या चाहिए? हमें चाहिए डेटाबेस नेम, स्ट्रिंग, जैसे हम लोगों ने ये ले लिया, ठीक है। अब हम इनका ऑप्शंस देखें, जैसे ये चीज़ें हो गई, अब हम लोग को इस क्लास में ऑटोकैड के थ्रू
देखो बात ये होती है कि हम लोग ऑटो वायर इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कराना पड़े, ठीक है। ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं होती है हर जगह ऑटो वायर करना। डायरेक्टली जो प्राइवेट फाइनल करके किया उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसको इनिशियलाइज कर देना होता है, ये रिकमेंडेड प्रोसेस होता है क्योंकि ये ऑटो वायर एनोटेशंस पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे ये एनोटेशंस फेल हुए तुम्हारे साथ तो या तुम मोस्ट रिकमेंडेड होती है कि ऑटो वायर नोटेशन यूज़ प्राइवेट फाइनल वाला, ठीक है, ताकि तुम डिपेंडेंट ना रहो और फिर वो आराम से काम भी कर पाए, ठीक है। अगर कुछ भी फेलियर हुआ नोटेशंस में तो वो तुम्हारी दिक्कत नहीं करेगी इस पर। अभी के लिए ऑटो वायर करके भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर डेटा टाइप इंक्रीमेंटल हुआ, डिफरेंशियल हुआ या फिर हमारा इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल या कोई उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, या तो हम स्विच केसेस यूज़ कर सकते हैं या तो फिर हम इफ एंड एल्स ब्लॉक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसका जो मेथड नेम है वो डाल देते हैं बैकअप
गया। अभी हम लोग लॉगिंग यूजली नहीं कर रहे, लॉगर यूज करेंगे जब नेक्स्ट स्ट्रीम होगा जो कि है अगला वीकेंड, तब हम लोग लॉगर यूज करेंगे। अभी लॉगिंग का पार्ट नहीं करते हैं। अभी फॉर इंस्टेंस हम लोग UTF-8 स्ट्रिंग्स में ही हम लोग आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद पंपिंग द आउटपुट टू अ लॉगर, रिटर्निंग आउटपुट फ्रॉम द UTF-8, ठीक है। तो ये दोनों भी कर सकते हैं। Running a timeout for 60 seconds, output to null output streams. Punting output to another output stream. Ending output line by line while processing. Okay. ये line by line, तो ये better है। Handling output line by line while process is running. ये Java 8+ पे ही है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन प्रोसेस यूज करेंगे। लेट्स सी कि ये कमांड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूटर। तो प्रोसेस एग्जीक्यूटर रिटर्न क्या करता है, तुम रिटर्न करके तुम या तो तुम स्ट्रिंग रिटर्न करो, तो जो चीज़ तुम रिटर्न कर रहे हो उसके हिसाब से फिर तुम्हारा वो होगा, या तो फिर लाइन बाय लाइन अगर कर रहे हो हैंडलिंग आउटपुट लाइन बाय लाइन,
process executor can be string, iterable और list. तो तुम list of commands भी दे सकते हो, तुम string of commands भी दे सकते हो, iterable strings भी दे सकते हो. अभी for example हम ये dot command डालते हैं जो कि as a string ही भेजेंगे, ठीक है. तो अब ये strings वाले कमांड कैसे जाएंगे कि हम लोग फाइल पे जाते हैं. तो इन ऑर्डर टू यूज पोस्टग्रेस वाला, तो ये वाले हैं नाउ इफ database type is equal database type dot postgres, ठीक है. अगर ऐसा होता है तो अभी के लिए ठीक है. अभी ठीक है, थोड़ा और कम कर देंगे. म्यूजिक वॉल्यूम सही है. तो हम लोगों ने अभी तक डेटाबेस बैकअप टाइप्स देख लिया हम लोगों ने कि डेटाबेस जो हमारा पोस्टग्रेस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि कमांड डाल देंगे और फिर रीड आउटपुट ट्रू हो जाएगा. तो इसमें क्या है कि अभी तक स्ट्रिंग ले रहे हैं. अगर हम लोग बाकी बात जब लॉगर्स वगैरह में यूज़ करेंगे तो या तो हम लोग स्ट्रिंग को आउटपुट कर सकते हैं लॉग्स में भी, इसमें लिखा है पंपिंग द आउटपुट टू द लॉगर एंड आउटपुटिंग टू UTF-8 स्ट्रिंग्स, तो इसमें भी कर सकते हैं. तो अभी क्या होगा कि अब हम लोग जाके देखते हैं कि हम लोग क्या pg डंप डाल सकते हैं, फिर fcf बैकअप फाइल का नाम और फिर MyDB जो भी तुम्हारा डेटाबेस का नाम है. तो इस तरह से हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो लेट्स कॉपी दिस, जो भी नाम है जस्ट कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट मार देते हैं. ठीक है. तो ये जैसे ये फाइल पाथ है, तो फाइल पाथ हमको देना है, तो हम लोग फाइल पाथ दे सकते हैं. स्टोरेज में हम लोग डाल सकते हैं इसको. स्टोरेज में बोलेंगे पोस्टग्रेस बैकअप डॉट
txt। अभी के लिए तो हम लोगों ने यही डाला है, ठीक है। तो फाइल पाथ हम लोग को डिटरमाइन करना है ना, तो फाइल पाथ इज इक्वल्स टू अगर हम लोग फाइल पाथ देते हैं, एक था ना स्ट्रिंग टू फाइल पाथ कन्वर्टर था, या तो फिर हम लोग फाइल्स डॉट पाथ करके भी यूज़ कर सकते थे हम लोग, ठीक है। तो अगर हम फाइल्स डॉट तो था, याद नहीं आ रहा मुझे, फाइल्स डॉट, चलो पहले यहाँ डेटाबेस नेम डालते हैं, डेटाबेस नेम आ गया इधर, और फिर यहाँ हमको फाइल पाथ डालना है। तो यहाँ पर था क्या ही, एक मिनट यार, याद ही नहीं आ रहा, चलो स्ट्रिंग टू फाइल पाथ इन जावा। तो हम लोग स्ट्रिंग से फाइल पाथ कैसे कर सकते हैं, पाथ्स डॉट गेट करके एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन पाथ्स डॉट गेट, हाँ फाइल्स डॉट गेट नहीं है, पाथ्स डॉट गेट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वहाँ जा करके स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे, और ये स्ट्रिंग क्रिएट क्या करेंगे, स्ट्रिंग डायरेक्ट डाल देंगे, फिर पाथ्स डाल देते हैं कि पाथ इज इक्वल्स टू फाइल पाथ नेम दे देते हैं, फिर पाथ्स डॉट गेट करके अब यहाँ पर हम लोग अपना वो दे देंगे, क्या बोलते हैं, फाइल पाथ। तो अभी हम लोग का फाइल पाथ जो भी है वो है स्टोरेज स्लैश पोस्टग्रेस बैकअप डॉट txt। तो अभी के लिए तो हम लोगों ने यही स्टोरेज दिया है, बाकी बात हम लोग यहाँ पर फाइल पाथ दे सकते हैं, फाइल पाथ, पता नहीं ये क्यों है, पाथ कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टाइप। हाँ अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रहा है कि द मेथड कमांड इज द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ओके, इन द टाइप प्रोसेस, अच्छा ओके, एंड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग पाथ, ओके। तो हमको ये एज अ स्ट्रिंग ही दे देना है, हमको पाथ नहीं बनाना है इसमें। तो हम एक काम करते हैं भाई, स्ट्रिंग फाइल पाथ ही दे देते हैं, इतना झंझट ही नहीं होगा। कमांड ये हो गया कमेंटेड आउट, तो ये फाइल पाथ, अब ये शायद काम करना शुरू कर देगा। तो हमने क्या किया अभी तक, शुरुआत से बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या करा है, कि अभी तक हमारा जो एंड गोल था कि पहले डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो हम लोगों ने डेटाबेस से कनेक्ट किया थ्रू कमांड लाइन, जिसमें हम लोगों ने सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स थे हमने लिए। फिर हमने सर्विसेज क्रिएट किया, जिसमें सर्विस में जाने के बाद हम लोग डायरेक्ट जो है वो रजिस्टर कर सकते थे कनेक्शन में यूजिंग द JDBC ड्राइवर, जिसमें कनेक्शन हम लोग को मिलता है, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेट द कनेक्शन इन द रजिस्ट्री। रजिस्ट्री हमारा एक फाइनल क्लास है, जो कि एक हेल्पर क्लास है कह सकते हैं, जो कि हमारा कनेक्शन स्टोर करता है। तो हम लोग अगर यहाँ कनेक्शन रजिस्ट्री में जाएं तो हमारे पास ये सारे कनेक्शन स्टोर होते हैं। कनेक्शन हो जाने के बाद हमारा प्रायर अभी जो काम था कि हम लोग बैकअप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो MySQL PostgreSQL के सारे बैकअप टाइप्स पढ़े थे हम लोगों ने, जिसमें कॉमन टर्म्स थे
कि माई एसक्यूएल डम्प जो कि ओवरऑल बैकअप क्रिएट कर देता है, फुल बैकअप क्रिएट कर देता है। दूसरा होता था फाइल बेस्ड बैकअप। फाइल बेस्ड बैकअप में एक प्रॉब्लम थी कि हमें जो है डेटाबेस को बंद करना होता है, फिर उसके बाद बैकअप क्रिएट करके फिर बैकअप को जो है फिर बैकअप क्रिएट करने के बाद फिर हम लोग अपने जो भी बैकअप डेटाबेसेस हैं उनको स्टार्ट करना होता। तो सबसे बड़ा डिमेरिट ये था। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास दूसरा है WAL। WAL स्टैंड्स फॉर कि राइट अहेड लॉग्स। तो उसके थ्रू आर्काइविंग के थ्रू हम लोग जो है अपना डेटाबेस बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी जो है हमें अपने डेटाबेस को बंद नहीं करना पड़ेगा। हमारे इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा काम हम लोग को करना क्या था कि हम लोग को 3 टाइप के बैकअप्स प्रोवाइड करने थे टू डिफरेंट डेटाबेसेस जो कि उसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हर डेटाबेस के लिए अलग अलग टूल्स हैं जो कि पोस्टग्रेस में है, पीजी बैकअप रेस्ट। ठीक है, या तो फिर हम लोगों ने अभी अभी फ़िलहाल के लिए जो हम लोगों ने यूज़ किया है वो है पीजी डम्प। पीजी डम्प हम लोग अभी जो हम लोग फोकस कर रहे हैं वो भी फुल पे फोकस कर रहे हैं। फुल जब एग्जीक्यूट हो जाएगा ढंग से देन वी विल फोकस ऑन टू डिफरेंशियल एंड देन वी विल फोकस ऑन टू इंक्रीमेंटल। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके वी विल प्रोसीड। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी तक क्या करा कि डेटाबेस बैकअप्स क्रिएट किए। उसके लिए हमने एक इनम्स क्रिएट किया। इनम्स में फुल इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल होगा। उसके बाद जो डेटाबेस बैकअप है उसमें जा करके हमने जो जो चीज़ रिक्वायर्ड थी, जैसे डीबी टाइप लिया हमने, बैकअप टाइप लिया, फिर डेटाबेस नेम लिया, और ये सारे हम लोगों ने एक सर्विस में भेज दिए। सर्विस बेस में क्या किया कि एक आउटपुट लिया जिसको नल करा हमने, या नल करा या फिर ये कर सकते हैं। और फिर इस वाले में आउटपुट में हमने इस वाले को जो भी कमांड हमने एग्जीक्यूट किया हमने वो डाल दिया। ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस एग्जीक्यूटर है वो कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद आउटपुट रीड करता है और ये एज अ स्ट्रिंग भेज देता है। हम लॉगर के बारे में भी देखेंगे। अगर हम लोग जो अगला वीकेंड है उस पर हम लोग जो फोकस करेंगे तो उसमें हम लोग लॉगर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें कि लॉगर्स में भी ये लॉग्स भेजा जाए और स्ट्रिंग के फॉर्म में भी आउटपुट हमें आते रहे। तो अभी के लिए हम लोगों ने ये करा है। ठीक है, माई एसक्यूएल के लिए नहीं करा है, माई एसक्यूएल के लिए भी कर ही देते हैं। ठीक है, माई एसक्यूएल के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो माई एसक्यूएल के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमारा पीजी डंप था तो वैसे ये माई एसक्यूएल डंप होगा। ठीक है, In the booth I cook. Out the mud had to grind for the look. Now my name in the books. Gold on my teeth, came from the pain. Now all my kids gon' eat. Put that on blood. This ain't luck. Every win was earned in the street. Closet full, no stylist. Still the coldest, that's timeless. From a dream to a diamond chain. Now look how I'm vibing. Got out the hood. यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है। हम लोग यहाँ कॉपी कर लेंगे और फिर हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये लेंगे और फिर यहाँ पेस्ट मार देंगे। I made it, I swear on my soul. Wasn't born a G, but I earned that role. Stacked up racks, stayed on cold. Took care of the fam, that's all I know. Never fold, just bang rolls. We outside, yeah, we glow. From nothing to something, that's how it goes. Let me show you how the real. तो ये हमारा फुल बैकअप क्रिएट कर देगा। तो एक बार रन करके देखते हैं ताकि ये काम कर जाए या फिर काम करता है कि नहीं, ट्राई करते हैं। तो हमारे पास ये सेल स्क्रिप्ट है, हम लोग एग्जिट करते हैं इसको। ठीक है, फिर इसको रन करते हैं। ठीक है, हमारा सेल स्क्रिप्ट रन हो गया है। हम लोग एटलस में
ये करते हैं, हम लोग कनेक्ट हो गए। अच्छा, कनेक्शन लेना ज़रूरी था। अभी तक हमने कनेक्शन कॉल आउट नहीं किया है, कनेक्शन डॉट गेट करके, तो हमें शायद कनेक्ट करना होगा बिफोर पंपिंग दिस कमांड। ठीक है, अगर हम लोग कनेक्शन लें, कनेक्शन, ठीक है, और ये कनेक्शन हम लोग रजिस्ट्री से लें, सॉरी, registry dot, not this registry, we need to import auto wire the registry, I think. क्या नाम था हमारे रजिस्ट्री का? कनेक्शन रजिस्ट्री नाम था हमारा। कनेक्शन रजिस्ट्री हम लोग को ऑटो वायर करने की ज़रूरत नहीं है शायद, वी कैन डायरेक्टली हमने क्या करा था इसमें, करा था, सॉरी, सेम थिंग। हम लोग जैसे registry डॉट गेट करेंगे तो हमारे पास कनेक्शन आ जाएगा। आई डोंट नो कि ये कनेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं, बट स्टिल हम लोग अभी वो वाला कमांड यूज़ करेंगे। हेल्प पहले लिख लेते हैं ताकि हमारा आ रहा है कि नहीं। तो बैकअप डेटाबेस, तो बैकअप डीबी हेल्प डालते हैं। तो बैकअप डेटाबेस में हमारे पास डेटाबेस टाइप पूछ रहा है, बैकअप टाइप्स पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दे दिया है हमें ऑप्शंस में कि डेटाबेस टाइप कैन बी MySQL, PostgreSQL, मैं फुल इंक्रीमेंटल एंड इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो हम लोग वही देंगे, बैकअप डीबी। तो डेटाबेस टाइप डालते हैं अभी के लिए पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ओके, हम लोग को भी देना होगा टाइप पोस्टग्रेस एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ओके, यहाँ पर हमने वो टाइप नहीं बदला है, सॉरी, हमने एक गलती कर दी है इधर, लॉन्ग नेम्स हमने चेंज ही नहीं करा है अभी तक। तो यहाँ टाइप नहीं, यहाँ बैकअप हो जाएगा और ये नेम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से चालू करते, सॉरी, फिर से मुझे चालू करना होगा हम लोग को। एग्जिट करते हैं, देन वी विल रीस्टार्ट। हमारा चल गया, वी विल जस्ट कनेक्ट हो गया हमारा ना। बैकअप में हेल्प ले लेते हैं, हमारा ना ये चेंज हो गया, तो फिर बैकअप डीबी, बैकअप डीबी type PostgreSQL postgres हो गया। फिर हमारा बैकअप टाइप, बैकअप will be full for now, string name होगा atlas, नेम हो जाएगा atlas। तो हमने कनेक्ट प्रोसीजर किया है atlas। तो ऑप्शन वैल्यू
still database type. stunting, that shit ain't working. My drip Any costs other more than your whole option? damn life. No cap, I ओके can take हमने your शायद wife. यहाँ पे बैकअप Slide टाइप through in a mad black Benz, looking like sin with a devilish grin. You ain't got racks, boy, why you pretending? Big bags, I ain't even gotta spend it. Hating on me, cause they know I'ma send it. Tryna keep up, but they already winded. Ice on my wrist, got the room on freeze. Betty on my phone, tryna drop to her knees. Top dog in the game, who the fuck won't be? Stand down, you ain't built like me. You ain't roll with a boss, you will wanna be. Talk loud till I show up, then they never speak. DM's full, I ain't checking a thing. I on the throat, I ain't buy no ring. उस Whole team winning, we been on go. क्रैश How about a wheel with a chain that glow? They try but they ain't on cold. This level of pressure, they ain't built for the smoke. कुछ तो हुआ है Smoke. Yeah. ओके हमने रिटर्न ये नहीं करना ये रिटर्न करना था Hey. कोई बात नहीं guys, एक बार फिर से देख लेते हैं Top floor, holding my सारे sweet all रिटर्न tens. टाइप सही है Jet ski, jet on my way to the ends. अभी Dine तक out, तो सही है eat on a plane, all friends. लेकिन हमारा बैकअप नहीं बना यार ये Triple my chain, all gems. लेट्स चेक यार Top floor, holding my sweet all tens. फिर से एक बार चेक करते हैं Jet ski, jet on my way to the ends. Dine out, eat on a plane, all friends. VVS, triple my chain, all gems. I gotta run it up, I gotta get it, you can't run with us. Boy, you be tripping, you ain't one of us. You say you winning, but you under us. Yeah, you ain't one of us. I do this shit with my brothers. I'm on the top flow, double R color, and I swear they can't fuck with us. They tryna run with us, they tryna keep up the game, but they just be ducking us. And I swear I do this shit अभी with my कनेक्ट fam. करेंगे And you know I'ma ride for them. If you got beef, then you know I'ma slide for them. My brother's dead, and you know that I'm dying with them. I'ma hop out the Lambo and hop in the Phantom. Yeah, I do नो this सच shit for फाइल the है bros. डायरेक्टली We the same ones in the jam. Yeah, I'm sticking to the code, and I got that shit for my grams. And you know I'm on go, and you know I got all the plans, so I can never lose hope. And I know I'ma give me a band. Yeah, I know I'ma give me a band. ओके I'ma go hard for the team, and I'm never switching up a fan. Cause I'ma do this shit for my dreams, and I got some dreams and some plans. So I'ma go hard for the green, and I'ma go hard for my fans. Yeah, you know I'ma go hard for my fans. Top floor, hoes in my sweet all tens. Jet ski, jet on my way to the ends. Dine out, eat on हम a plane, इसका all friends. पार्ट कॉपी VVS, करते हैं on my chain, all gems. Top floor, hoes in my sweet all tens. Jet ski, jet on my way to the ends. Dine out, eat on a plane, all लेट्स सी friends. काम करेगा कि नहीं VVS, drip on my chain, all gems. यहाँ उनको चेक करेंगे इसका अपडेट Notice that sexy shot in the dance floor. I'm tryna see how you dance with your pants off. How you make your body move like a NASCAR. This that raw, uncut shit, not a dance song. Got me going on my way. Might just spend a couple racks on your outfit today. See the body move, bitch, I'm out of my brain. Tell her she could do whatever, I'ma still do my thing. My last shawty, she ain't listen, she was hard-headed. Tryna touch the world, put the whole globe in my possession. If I told you about my last life, you never get it. See me with the cash right, you never get it. Might just pull a fast one, shawty go and get it. Pimp name, how you know? Shawty, cause I said it. I been tryna make a play, but they won't let it. Shawty told me I'm a real one, cause I don't edit. Notice that sexy short in the dance floor. I'm tryna see how you dance with your pants off. How you make your body move like a NASCAR. This that raw, uncut shit, not a dance song. Got me going out of my way. Might
just spent a couple racks on your outfit today. See the body move, bitch, I'm out of my brain. Tell her she could do whatever, I'ma still do my thing. Shorty get whatever she want, whenever she want, however she want, bitch, I don't stunt. I told you I'm one of the realest, so I'ma keep it a buck. I feel like I'm on top of the world, and I ain't never get stuck. But you know that's just life. Check Got a lot of shit to do, but I'ma keep it in sight. Got a lot of work to do, but I'ma get it alright. She said she don't want a lame, and I told her I'm right. And you know I like to brag about you. I might spend a couple racks on you. I'm not tryna make a rap about you. I want you and I don't have to doubt you. Real shit, I wanna give you what. Lil' mama too crazy, wanna do drugs and make love. We ain't seen the sun for days, bruh. Can't tell if she crazy or I'm lazy. Maybe I'm a hypocrite or maybe I'm in love, 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 love. I'm in love, 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 love. Met her on a Thursday, slid to my crib on the first day. Had me hung over by the third day. Can't believe she wore that shit to church, eh? Two turn, might fuck around and pass away. If I die, I'm going out the G-way. Keep the hoe around cause she loyal. But if she don't, she can dip, it's okay. Lil' mama too crazy, wanna do drugs and make love. We ain't seen the sun for days, bruh. Can't tell if she crazy or I'm lazy. Maybe I'm a hypocrite or maybe I'm in love, 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 love. I'm in love, 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 love. Lil' mama too crazy, little bitch is a psycho. We both on some drugs, ain't no telling where I might go. Fucking on this bad bitch, she could be a typo. Hope I got the right hoe, hope I got the right hoe. But she keep doing the wrong things, so I told her that I'm gone, baby. I know we don't get along, baby. She said you knew that all along, baby, but I don't want you to be alone, baby. So I hit you when I'm home, baby. Know you tired of that same song, baby. And she said please don't do me wrong, baby. Please don't do me wrong, baby. Lil' mama too brazy, wanna do drugs and make love. We ain't seen the sun for days, bruh. Can't tell if she crazy or I'm lazy. Maybe I'm a hypocrite or maybe I'm in love, 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 love. I'm in love, 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 love. Lil' mama too brazy, she told me she need me to save her. Told her I don't save hoes, I save paper. Can't save her, can't save her. I just want a good girl to wanna. Yeah. Skirt. Yeah. Hey, I don't score, I just own it. Whips on whips, I clone it. Driveway full, can't zone it. So I park that shit with a drone in. New keys, no tags. Private jet, no lag. Take off clean, no drag. And the wrist got drip, no cap. Level up, ain't done yet. Two coupes, that's one bet. In the sky with the sun set. Still ain't hit the top, that's a dumb flex. I'm a baller, you can tell by the aura. Driveway packed, not a hanger in order. I don't flex for the likes of the quota. Got more rides than your whole damn corners. I'm a baller, this ain't for the fame. All my toys go vroom, not the same. I don't even park shit in the rain. So I slide that Lambo in the plane. Push start, all I do. 610 like Malibu. Too clean, no residue. Got racks in the back with the attitude. All black tint, no peeking. Too much drip, I'm leaking. And the engine loud when it's breathing. Put a jet on the gram on the weekend. New bag, no plan. New tag, no scam. If I said I was done, goddamn, I still pull up in the ghost with the fam. I'm a baller, you can tell by the aura. Driveway packed, not a hanger in order. I don't flex for the likes of the quota. Got more wheels than your whole damn corner. I'm a baller, I do it for the vibe. All this gas, I don't even gotta drive. It's the life, we ain't gotta lie. So I put my car in the hang. Hey, two.
whips. Parking planes now. This shit different. Sorry. अच्छा, connection to the server, the socket failed. Password unknown. इस टाइप का पासवर्ड चाहता है, ऑथेंटिकेशन ही फेल हो रहा है। अरे ये कैसे पॉसिबल है? चलो फिर से देखते हैं।
भाई सही पासवर्ड है, स्टिल ये नहीं हो रहा। I can barely recognize your face, even when you scream out. यूज योर एक्चुअल डेली यूजर, वही तो यूज करना है। Every अच्छा, time you see me, you say, माइनस यू। remember how I told you to stay. हम यूजर भेज देंगे ना। It's not like I meant to go away. हम जब कनेक्शन क्रिएट किए हैं तो हमारे कनेक्शन से क्या क्या मिलेगा मुझे? मुझे कनेक्शन से मिलेगा भाई, कनेक्शन डॉट गेट यूजर, नहीं, गेट कैटलॉग, गेट नेटवर्क, गेट स्कीमा, वो तो ठीक है, समझ रहे हैं। I wish I could have helped you in some way. I wish that I could have just stayed, but your eyes are filled with hate. But remember how I told you it changed. कनेक्शन डॉट गेट मेटा डेटा, ठीक है। यूजर इक्वल्स टू कनेक्शन गेट मेटा डेटा गेट, जैसे हमको ये मिलेगा अब हम उसको, ठीक है, माइनस यू करके एच इज लोकल होस्ट यू को पोस्टग्रेसक्यूएल। हाँ, तो मेटा डेटा में आप होस्ट वगैरह भी ले सकते हैं ना। स्ट्रिंग होस्ट कनेक्शन डॉट गेट मेटा डेटा डॉट गेट होस्ट, नहीं, कनेक्शन से होस्ट नेम ले सकते क्या? कनेक्शंस MJDBC can we retrieve? Yes, you can. I don't get URL.
ओके गाइस, 3 साढ़े 3 घंटे हो गए। अब मुझे लगता है कि स्ट्रीम को स्टॉप कर देना चाहिए एंड हम लोग आगे देखेंगे कि क्या करना है इसके ऊपर। फॉर नाउ वी हैव दिस कोड जहाँ पर हम लोग कनेक्ट हो जा रहे हैं, पासवर्ड भी दे पा रहे हैं, मगर कुछ शो नहीं कर रहा है इस पर। तो आगे देखेंगे अगला स्ट्रीम में कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो जल्द मिलेंगे आपसे। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस।